પૂજ્ય ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી અક્ષરધામ નિવાસી થયા ત્યારથી જ હરિભક્તો આઘાતમાં સરી પડ્યા છે અને તેમના અંતિમ દર્શન કરવા માટે ઉમટી પડી રહ્યા છે। દેશ વિદેશથી હરિભક્તો તેમના અંતિમ દર્શનાર્થે આવી રહ્યા છે, જેમાં રાજકીય નેતાઓ પણ જોડાયેલા છે। મહારાષ્ટ્રના ઉદ્યોગ મંત્રી સુભાષ દેસાઈ પણ સોખડા હરિધામ પહોંચ્યા હતા અને ત્યાં હરિપ્રસાદ સ્વામીજીના અંતિમ દર્શન કરી તેમને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી અને આ દરમિયાન તેમણે એક નિવેદન આપ્યું છે। તેમણે કહ્યું કે આ પહેલા જ્યારે હું સ્વામીજીને મળવા આવ્યો ત્યારે તેમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયા અને તેમનું માર્ગદર્શન મળ્યું, પરંતુ આ વખતે જ્યારે આવ્યો છું ત્યારે તેમના અંતિમ દર્શન કરવા માટે આવ્યો છું। સ્વામીજી દ્વારા હંમેશા જ સમાજને ઉપયોગી થાય તેવા કામો કરવામાં આવ્યા છે। સમાજ સેવી તેમનું મન હંમેશા રહેલું છે અને યુવાઓને હંમેશા જ સાચી રાહ તેમણે દેખાડી છે અને આજે તેમણે જ્યારે આપણા સૌની વચ્ચેથી જતા રહ્યા છે ત્યારે લાખો યુવાનો એ વાતના સાક્ષી છે કે સ્વામીજીએ તેમને સાચી રાહ દેખાડી છે। સુભાષ દેસાઈ તેમના અંતિમ દર્શનાર્થે જ્યારે આવ્યા ત્યારે તેમણે મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરેનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો। તેમણે જણાવ્યું કે અત્યારે પરિસ્થિતિ સારી ન હોવાના કારણે તેઓ નથી આવી શક્યા, પરંતુ તેમના દ્વારા પણ સ્વામીજીને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવામાં આવી છે અને સાથે જ તેઓ પણ स्वामीजीना अनेक कार्यों थी खूब ज प्रभावित रहा है। परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी के ब्रह्मलीन होने के बाद में उनके दर्शन करने के लिए आज यहाँ सोखड़ा आश्रम में मेरा आना हुआ। स्वामी जी के दर्शन तो लिए। इसके पहले जब मैं आया था सोखड़ा, तब स्वामी जी का आशीर्वाद मार्गदर्शन मुझे मिला था। आज वो हमसे बात तो नहीं कर सके, लेकिन उनकी जो शक्ति है, जो आशीर्वाद है, वो हमेशा हमें साथ में रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में जो कार्य किया है वो सभी को प्रेरणा देता रहा। उन्होंने समाज के हित का हमेशा चिंतन किया और जन कल्याण के लिए अपने भक्तों को हमेशा मार्गदर्शन करते रहे। फिर किसी दुखी व्यक्ति की मदद करना हो, समाज के लिए कोई सुविधा करके देना हो, स्वास्थ्य के विषय में, शिक्षा के विषय में, वो हमेशा भक्तों को प्रेरित करते थे कि इस क्षेत्र में काम कीजिए। रक्तदान शिविर का आयोजन भी उनके मार्गदर्शन से जगह जगह पे होता रहा। मैं जब भी उनसे मिला हूँ, एक नई शक्ति का अनुभव मुझे हुआ है और उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मेरे साथ में रहा और हमेशा आगे भी रहेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी का उनके लिए भी स्वामी जी का स्नेह हमेशा रहा है। उनके दर्शन उद्धव जी ने किए थे और युवकों के बारे में जो स्वामी जी का जो उनके विचार थे, उससे उद्धव जी भी प्रभावित हुए थे। वो स्वयं यहाँ आने के लिए भी तैयार हो जाते, लेकिन महाराष्ट्र पे जो एक गहरा संकट आया है, प्रकृति का प्रकोप होने के कारण महाराष्ट्र के कई जिलों में बहुत जनता परेशान हो गई है। उस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी को वहाँ रहना और जनता के बीच जाकर के उनके साथ बात करना, उनको एक आधार देना उनका कर्तव्य बनता है। इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप जा रहे हो, अच्छी बात है। मेरी संवेदना भी और मेरी श्रद्धांजलि स्वामी जी के प्रति जो है वो वहाँ आश्रम के सारे संतों तक आप पहुँचाइए। उन्होंने एक संदेश का पत्र भी मेरे साथ दिया है और स्वामी जी के कार्य से वो हमेशा प्रेरित हुए हैं और उनको बड़ा गहरा दुख हुआ। तो आज यहाँ आने के बाद में मैंने देखा कि
भक्तों की जो भावना है वो भावना ही आगे मार्ग बताती रहेगी और स्वामी जी ने बताए हुए रास्ते पर, उनके मार्ग पर ये सभी भक्त और साधक जो है वो हमेशा चलते रहेंगे। और जैसी स्वामी जी की इच्छा थी उसी तरह महान कार्य इस केंद्र से हमेशा बनते रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मेरी स्वामी जी के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि। સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ સાથે જોડાવા માટે લાઇક કરો અમારા ફેસબુક પેજને, સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી યુટ્યુબ ચેનલને અને ફોલો કરો અમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટને।